Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन विषय रे पढ़िबा ऑलरेडी हमें जो एंड्रूज एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एथिरे क्रिटिकल कांस्टेंट विषय रे बेसिक आइडिया जानि सारिछु क्रिटिकल टेम्परेचर अछि क्रिटिकल प्रेशर अछि क्रिटिकल वॉल्यूम अछि okay so critical temperature is defined as the maximum temperature at which a gas can be liquefied by increase of pressure alone okay आउ जदि आम टेम्परेचर बढ़ाई दबा क्रिटिकल टेम्परेचर रू so above this critical temperature the gas cannot be liquefied however large you can apply the pressure okay तापरे critical pressure होची it is the pressure which is necessary to liquefy a gas at critical temperature आउ शेषरे critical volume हला it is the volume which unit mass of a gas occupies at the critical temperature and critical pressure okay so ei jo tinita quantity asila TC PC और VC माने critical temperature pressure और volume याकू आमे critical constants of a gas बोली कहि थाउ आउ रहउची गोटे critical point माने कोन it is that point on the isothermal for a critical temperature at which the change of state from gaseous state to liquid state takes place under constant value of PC and VC okay so ei graph टा हमें जो एंड्रूज एक्सपेरिमेंट रे पाउथला सो गोटे जिनस एठी लक्ष्य कर हमर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पई हमर एटा आछी ओके दिस आइसोथर्मल ओके ei जो आइसोथर्मल KLM ओके KLM माने एटा जो तमर ए कर्व टा आसिला which is actually looks like concave downward so ei कर्व को एटा गोटे जस्ट गोटे पॉइंट रे टच करिकि जाउची ओके अच्छा पुणी आमे जो क्रिटिकल पॉइंट कथा कहूछु एक्चुअली when the two end points okay when the two end points saturated liquid and saturated vapor okay ei jo dui end point रहुची on the same isotherm approach each other ताले कोन हबो then limiting position on a PV diagram is called critical point okay so the slope of this isotherm which is passing through the critical point okay जो गोटे पॉइंट रे सेटा टच करथला ताकू ही हमें क्रिटिकल पॉइंट कहबा okay so सेही जगह रे ए आइसोथर्म रो स्लोप टा केते हिजबो ना इक्वल टू 0 हिजबो तेनु आमे लिखि परिबा del P by del V at critical temperature is equal to 0 okay so पुणी वापस आसीबा सेही फिगर को सो देख ये जो पॉइंट रोची L एटा होची क्रिटिकल पॉइंट ओके आ गोटे जिंस जो आइसोथर्म हमें कहला KLM ओके एटा होची क्रिटिकल पॉइंट रे आइसोथर्म टा सो इट इज कॉनकेव अपवर्ड at volume less than critical volume and concave downward at volume more than critical volume okay so देखो एटी वॉल्यूम को हमें x एक्सिस रे नीचो जदि वॉल्यूम टा कम रहउची क्रिटिकल वॉल्यूम रु ताले एटा अपवर्ड एटा कनकेव देखा जाउची किंतु वॉल्यूम टा जदि बेसी रहउची क्रिटिकल वॉल्यूम रु ताले देखो एटा डाउनवर्ड कनकेव देखा जाउची okay so that is why the critical point can also be referred as a point of inflection on the critical isotherm okay point of inflection so हमें एठी याकू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को भी हमें 0 सहित रिलेट करि परिबा so del square P by del V square at critical temperature is equal to 0
आउ ये जो रहिला क्रिटिकल वैल्यूज प्रेशर वॉल्यूम आउ टेम्परेचर ताको आमे कैलकुलेट करि परिबा बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड above to equation 1 and 2 जो आमे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देखिला. Now let us see how can we determine the critical constants experimentally. So देखो ये जो तीनटा क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स माने क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर आ वॉल्यूम जेमती कहली याकू आमे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करि परिबा बाय यूजिंग अ सेटअप. सो এই মেথড को साधारणतः यूज करा जाए फॉर द केस ऑफ लिक्विड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. आ यार प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एट क्रिटिकल टेम्परेचर जो बाउंड्री रोचे बिटवीन लिक्विड फेज आउ वेपर फेज सेटा उभे जाए इट कंप्लीटली डिसअपियर्स. ओके अच्छा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रे देखो एठी गोटे आमे वेसल नेबा. ओके वेसल नेबा याकू आमे कोन करिबा एनक्लोज करि रखिबा विदिन अ हीटिंग जैकेट. ओके दिस हीटिंग जैकेट व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लास आ ता भितरे आमे लिक्विड और लिक्विफाइड गैस नेबा व्हिच इज टू बी एग्जामिन्ड. ओके जार आमे क्रिटिकल कांस्टेंट्स बाहर करिबा. ओके आ एई एपारेटस को यूज करिकी जो क्रिटिकल कांस्टेंट रो डिटरमिनेशन करथिले जणे साइंटिस्ट कैग्नियार्ड डी लाटोर इन द ईयर 1822 माने आज को प्राय 200 वर्ष पूर्वे. ओके सो एठी आमे कोन करिबा गोटे थर्मोस्टाट यूज करिकी आमे कोन करिबा एठी धीरे धीरे टेम्परेचर को वेरी करि परिबा कम बेसी करि परिबा लिक्विड रो. ओके अच्छा गोटे मर्क्यूरी मानोमीटर अछि. ओके यार शेप टा देखो यू शेप अछि मानोमीटर and this manometer is attached to the vessel V. Okay now initially ame kon kariba ei vessel V को ठंडा करिबा. It is cooled by lowering the temperature. So on cooling the surface which is separating the liquid and vapor it becomes very sharp. Okay this is the surface of separation. This one ए जो कर्व बळिया देखा जाउची. Now एबे पुनी टेम्परेचर को आमे बढ़ेबा. If we raise the temperature of the jacket gradually then we go on increasing the temperature until the meniscus between the liquid and vapor just disappears. Okay just disappear जेतळे हेगला. Suppose say time रे temperature को आमे नोट करला तार वैल्यू हेगला T1. एबे पुणी कोन करिबा पुणी जैकेट को आमे ठंडा करिबा. We allow the jacket to cool down gradually until the cloudiness due to condensation because vapor ta puni thanda hele cloudiness asibo condensation karile. Okay so it appears again. Okay let this temperature be noted as T2. Okay so ame ebe kon kariba ei duita temperature paila T1 ଆଉ T2 तारो mean value बाहर करिबा. ओके आ यार mean value हे जिवो तमरो critical temperature. ओके से जिनसटा एठी देखो कहूँ क्रिटिकल टेम्परेचर Tc इज इक्वल टू T1 plus T2 by 2. So similarly the mean of the pressure जदि आम प्रेशर भी से भाया नोट करवा ताले P1 P2 जोटा आम मानोमीटर रू रीड करथिबा corresponding to the two temperatures T1 T2 ताले सेथिरु भी आम mean pressure बाहर करि परिबा which is nothing but the critical pressure Pc equal to P1 plus P2 by 2. एबे आमे गोटे ग्राफ प्लॉट करि परिबा between the mean values of densities of liquid and saturated vapor of substance along x axis. So एठी आमे डेंसिटी को x axis रे नबा आउ टेम्परेचर को y axis रे नबा ताले जो ग्राफ आसीबो देखो एठी कर्व AB जो आमे पाउछु when the temperature is increasing एटा सैचुरेटेड वेपर रो डेंसिटी को देखाउची. तापरे जेतबेले टेम्परेचर डिक्रीज करिगला सो ग्राफ आमे जो पाइला CB एटा होची लिक्विड रो डेंसिटी को. ओके सो ए पॉइंट जो B आसिला एटा होची एई वेपर आउ लिक्विड रो ठीक मझी स्टेज टा. ओके वेयर द डेंसिटी बिकम्स इक्वल. So this point B must be the critical point and the corresponding density should be critical density. आउ corresponding temperature भी हिजबो critical temperature. ओके आ गोटे जिंस एठी लक्ष्य करो जो ए पॉइंट टा B आमे पाउछु याकू जदि आमे एग्जामिन करिबा एक्चुअली इट इज नॉट दैट शार्प रादर इटा टिके फ्लैट रहउची. ओके ए जो पॉइंट रे एटा टिके फ्लैट रहउची. आउ ए जो लाइन देखुछो डॉटेड लाइन BD एटा रिप्रेजेंट करची mean density को. Okay where the line is cutting the curve ABC is actually the critical temperature. Okay critical temperature ita
जो लाइन पॉइंट बी रे कट करुची because at this stage the density of liquid becomes equal to that of your vapor. Okay, so এই পয়েন্ট বি जोटा क्रिटिकल टेम्परेचर को सूचाऊँच सेटा क्रिटिकल डेंसिटी को मध्य सूचेब एंड बाय नोइंग द क्रिटिकल density and molecular mass of a substance we can calculate the critical volume which is given by Vc equal to molecular mass divided by critical density. এটা বহিরে টিকে প্রিন্টিং মিস্টেক थिला दुईटा को उल्टा लिखा ହେଇଥିଲା ମୁଁ एडिट कर ଦେଇଛି. So, in the very first experiment, which was performed by scientist Cagniard de la Tour in the year 1822, से देखिବାକୁ पाइले जे some liquids such as ether, alcohol, and water, when heated in sealed gas tubes, they are converted to vapors in a space from twice to four times the original volume of the liquid. Okay, so this is all about your critical constants and their determination. Thank you.